Hare Krishna, Jai Jagannath. So welcome all of you. This is the second part. So last time आमे देखिथिलु कि actually हम कहथिले कि गोटे गोटे सीरीज स्टार्ट करछो जोथे कि प्रीलिम्स जो थिला ओडिशा सिविल सर्विस एंड एसओ जहां भी ओपीएससी रो एग्जाम हिस लास्ट 3 to 4 years तारो बेसिकली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करू. लाइक कंप्लीट डिस्कशन मींस कंप्लीट एनालिसिस तार जो प्रति ऑप्शन थी से कौन कौन आंसर हो पारिबो कौन कौन क्वेश्चन हो पारिबो और तार किछि डिटेल्स हमें प्रॉपर्ली डिस्कस करू. सो दैट गोटे क्वेश्चन टू हमें एटलीस्ट 3 to 4 मोर क्वेश्चंस वी कैन गेट आल्सो. So I'm already 1 to 5 question number discuss करथलु. So let's move to question number 6. Okay. So question number 6. Ex situ conservation includes what? So there is two things called something called ex situ and in situ. Okay. So question पचारछि ex situ conservation भितरे कोन जाउछि? National park, botanical garden, biosphere reserves, wildlife sanctuaries. तो बेसिकली तुम जदि भी नाम जानी मने पडुनी ex situ कोन in situ कोन एई भलिया क्वेश्चन पचारछि तो तुम एठी गोटे एलिमिनेशन मेथड कर पारिबो. हैला देखो तुम नेशनल पार्क, बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए भितरु ऑप्शन ए नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए तीनटा हम कोन कंजर्वेशन करा होछि तम नेचुरल एनवायरनमेंट रे ता ए तीनटा भितर डिफरेंस जानिबा बहुत नियात दरकार. किंतु बोटानिकल गार्डन कोन हम गोटे आर्टिफिशियल गोटे गोटे एनवायरनमेंट तयारी करछु. हैला you can say zoological park also जेमते नंदनकानन रे बोटानिकल गार्डन अछि ओडिसा रो zoological garden park भी अछि. तो एरा कोन गोटे तांको गोटे हमें अन्य आडो आडकी ता नेचुरल एनवायरनमेंट आडकी गोटे जगह रे ताको हमें ताको सब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करछु बट स्टिल दे आर अंडर कवरेज एरिया. ओके तो बाकी किंतु एथरे कोन छ माने आराम से मूव करछन नेशनल पार्क रे बायोस्फीयर रिजर्व से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे. ओके सो दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड बट बोटानिकल गार्डन रे कोन से मान को बोटानिकल गार्डन हो कि बोटानिकल गार्डन माने कोन सोडी प्लांट्स माने अछन zoological park जोटी एनिमल्स माने अछन. ओके तो सही हिसाब रे तुमे एलिमिनेट करके भी कर पार जदी पचार थो एटी इन सिटू कंजर्वेशन से वाला थो तुमे भी कंजर्वेशन कर पारिबा. सो हियर आंसर इज बी botanical gardens. Now here you can see there is a figure here biodiversity conservation in situ and ex situ. In situ माने तांगर प्रोटेक्टेड एरिया बेसिकली जोटी ता नेचुरल एनवायरनमेंट रे प्लांट्स एनिमल्स जो कोन बायोडायवर्सिटी से माने ग्रो करचंती. तो तार एग्जांपल हला नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, sanctuaries, wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary बेसिकली छोटे छोटे एरिया थाए. नेशनल पार्क आउट के बेसिकली स्ट्रिक्टनेस अधिक थाए जोटी कि बाहर एक्टिविटी किछ अलाउड न थाए. बायोस्फीयर रिजर्व जोटी कि बेसिकली along with animals and humans are also considered as the part of the conservation. बेसिकली नेशनल पार्क रे कोन हला ह्यूमन एक्टिविटीज वन को बहुत रेस्ट्रिक्शन अछि बट बायोस्फीयर रिजर्व रे ह्यूमन एक्टिविटी जोटी कि स्मॉल लाइक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन all these things are there because सेवन स्टडी कोन जो इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी को भी तारा पार्ट मानुछंती. ओके तो भारत रे जति बायोस्फीयर रिजर्व अछि 13 टा ताको मन रखने आते दरकार बहुत इंपोर्टेंट हला को राज्य अछि को जगह हेछि है ना. एंड ओडिसा रे गोटे ही बायोस्फीयर रिजर्व अछि जोडा कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अछि दैट इज सिमिलिपाल बायोस्फीयर रिजर्व. बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को टिल नाउ बट इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड. नाउ बायोस्फीयर रिजर्व भी दुई प्रकार पारे टेरेस्ट्रियल मरीन. ओके टेरेस्ट्रियल माने लैंड मरीन माने वाटर जो बेसिकली समुद्र वाला जो मेनली कोस्टल एरियाज. एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्स सिटू कोन योर हे वाला सीड बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन फील्ड जीन बैंक सैक्रेड प्लांट बेसिकली जोडे तांगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रे रहउछन से माने. तो एटी जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थिला एटा कोन होला इन सिटू थिला बाकी 50 एक्स सिटू कोन बोटानिकल गार्डन आसगला एटी तमरो. ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Question number 7. The database generated by NVIS is used for the management of what? तो NVIS तुम्हारे जदि तो NVIS के सुनी न बट NV जो गोटे कोन एनवायरमेंटल भले नाटा आसुची तेनु एनवायरमेंट या सो ए भितर कोडा एनवायरमेंट से बेसी रिलेटेड अछि. पॉपुलर ग्रोथ, ओशन टेंपरेचर, प्रेशर टेंपरेचर, बायोडायवर्सिटी बेसी रिलेटेड भले लागुची. So answer is the option A biodiversity. So let's see what is NVIS. Realizing the importance of environmental information. So environmental information जानिया पई
The government of India in December 1982 December 1982 रे government of India कौन कला गोटे portal कला that is established an environmental information system जोटा कि ENVIS कहूँ the ENVIS full form कला ENV for environmental I for information S for system is a plan program. The focus of ENVIS science that is environmental information system since inception जोटा कि केबे 1982 has been on providing environmental information to decision makers policy makers जेमति तमरो environment impact assessment चला किसी गोटे प्रोजेक्ट तुम करा जो बिग प्रोजेक्ट डैम हो कि किसी लाइक कंस्ट्रक्शन लाइक रोड रेलवे so that may pass through some national parks some jungle areas some forest areas some like that so सेतरे कोन इम्पैक्ट होची लाइक सेतिकार फॉरेस्ट कम्युनिटी को सेतिकार ह्यूमंस को so एभला इंफॉर्मेशन हम देबे तो एनविस जो हला 1982 एस्टैब्लिश हेतला डिसेंबर 1982 के करथला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करथला हला फोकस कोन ता कोची कि environmental information to decision makers, policy planners, scientists and engineers, research workers, etc. all over the country. Since environment is a broad-ranging, multidisciplinary subject, a comprehensive information system on environment would necessary. So he saying environment is a broad-ranging, multidisciplinary subject. Correct? A comprehensive information system on environment would necessarily involve effective participation of concerned institutions, organizations in the country that are actively engaged in work relating to different subject areas of environment. Okay, so से because environment got a broad range of multidisciplinary subject, तो सेते सब प्रकार जो अछंती institute जो तार related तांकर effective participation दरकार like some geologists, some geographers, some like sociologists, तो से माने गोटे proper environmental information system दे परिवे like impact assessment भी करि परिवे so ENVIS has therefore developed itself with a network of such participating institutions तो environment information system रे कोन आछले जति कि हमरो अछंती like concerned institution related to environment तो तांकर participation जगु एटा डेवलप ही परछि तो ऐसे जगु एटा गोटे like meaningful ही परछि तो environmental information system is for the management of biodiversity so answer ठीक अछि so CBD is the full form पछे basically so convention of biodiversity is the full form of CBD these are some like vague terms central biological diversity conservation of biology okay so convention so what is convention so the UN means United Nations Convention on Biological Diversity जोटा कि ताको कहा जाय United Nations Convention on Biological Diversity also known as ACA means also known as the Biodiversity Convention is a multilateral treaty. It is a what? Multilateral treaty opened for signature at the Earth Summit. Very, very famous Earth Summit. Rio de Janeiro. Brazil. Brazil. Actually, previous capital of Brazil is Rio de Janeiro. Current capital is Brasilia. South American country is the biggest country in South America continent. That is the only country jahan ko dekhi kono. Basically, both your equator and Capricorn pass okay so it is a key document regarding sustainable development so UN Convention on Biological Diversity की जोड़ा कि UN CBD को होची UN CBD actually आज summit रे जो 1992 रे सेते बहुत important जिंस आसला UN CBD गोटे UNFCCC गोटे जार कोप होची every year हला United Nations Framework Convention for Climate Change हला तार फुल फॉर्म मन रखियो आ गोटे थिला कोन United Nations convention to forest degradation ko like degradation ko kame pai something like that one is there I think basically astila okay write that in comment section check you can search on Google okay gote thila tomaro convention of biological diversity CBD aute UNFCCC aute thila UNCCD sorry basically soil degradation to forest degradation ta kame pai so basically ke baitla 1992 re so it's the secretary kochi Montreal Canada secretary of what UN CBD it comes under UNEP but UNEP headquarter koti very very important UNEP headquarter is not in any European country or some American country it is in Africa hala Africa re koti achi Kenya re capital okay Kenya re capital kono jodi ki UNEP ro achi kono headquarter okay write it in the comment section UNEP headquarter koti 196 countries are party up to the CBD 196 तो तमे कहबो त अरे यूनाइटेड नेशन रे तो 196 मेंबर्स नांती 190 there are only recognized 193 so basically किछि मेंबर्स जोडा कि तमरो although UN द्वारा recognized नहंती से माने
like as a country, separate country जेमति कि ताइवान and like किछि country जेमति कोसोवो किछि country ताको recognize करते किछि करंतिनी, so like that. तो से भलिया किछि अछंदी. The convention is legally binding on its signatories. तो तुम जदि convention sign करछो ratify करछो तले it's binding. India is also a party to the convention. Ratified केबे करथला India 1994. So basically signing and ratification भितरे difference किछि पिला जानि नथिबे. Signing means धरो गोटे 1992 रे मीटिंग हला, तो सेठी तमरो एग्जीक्यूटिव माने जाइथिले किए, धरो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडिया रो किछि एनवायरनमेंट मिनिस्टर की किछि ब्यूरोक्रेट जाइथिले सपोज, तो से साइन करी पळि आसले. बट राटिफिकेशन केबे को हाजियो, बेसिकली सेही अनुसार जदि गोटे लॉ बना होची कोडी तमरो से कंट्री रो पर्टिकुलर पार्लियामेंट रे ताको हाजियो राटिफिकेशन. सो इंडिया ratified the CBD in 1994. The Biological Diversity Act 2002, Biological Diversity Act 2002 बेसिकली राटिफिकेशन हम कर देलु 1994 रे यूएन सीबीडी को, तो ताको से पय हम लॉ बनिया पड़े पार्लियामेंट रे. तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was enacted for giving effect to the provisions of the convention. To implement the provisions of the act, the government established the National Biodiversity Authority NBA. तो से पय बेसिकली यूएन सीबीडी दृष्टिकोण रे हमें कोन इंडिया कोन एक्ट बसला बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केबे आसला 2002 रे. आवश्यक अछि टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, तो गोटे बॉडी भी बनला अछि जोडा कहै नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनला जस्ट आफ्टर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. तो से क्वेश्चन पचारि पारे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 रे पास हेतला इंडिया रे, एटा को बेसिस रे आसला, को कन्वेंशन बेसिस रे. सो द कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हला यूएनसीबीडी. तो से सेटा पचारला फुल फॉर्म कोन जस्ट पचारसी, सो किछि बिला मे बी कंफ्यूज है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी भी लिखि दे पारंती. So that I think. So next, move to the. So okay, the conference of parties is the governing body of the convention. Basically, सबुथरे भी गोटे COP meeting में, like जेमति UNF trips every year होची. Okay, now only 2 member states. Okay, this is also very important. This last point is saying only 2 member states of United Nations are not parties to the CBD. So the time the state actually जेमाने although UN member, but they are not party to the CBD. Kiye? USA and the Vatican City. Okay, remember this thing. USA, United States of America, and the Vatican. Coming to question number 9. Which of the following is a correct combination? So combination you can see. Question is Sundarban rhinoceros. Sundarban National Park, rhinoceros बहुत famous. Okay, next Kaziranga lion. So Kaziranga lion बहुत famous. भरतपुर टाइगर्स फेमस की, बालू खंडरे ब्लैक बुक फेमस की. ओके, नाउ हियर हिज सी क्रॉस रेट मरा हिची. बेसिकली एलिमिनेशन मेथड हम यूज करे पड़िबो. सुंदरबन हम जानचे कोन रॉयल बंगाल टाइगर इज द फ्लैगशिप स्पीसीज. सुंदरबन कोडी अछि, वेस्ट बंगाल अछि. राइनोसोरस त तमर काजीरंगा रे, जोडा कि तमर आसाम रे अछि. सो लायन तमे जानचो कि एशियाटिक लायन इंडिया रे खाली गोटे ही नेशनल पार्क रो अछि, जोडे गोटे ही जगह अछि. कोडी गिर नेशनल पार्क जोडा गुजरात रो अछि. सो फर्स्ट एंड सेकंड तो एलिमिनेट हे गला. Now C and D भितर जदि जोडा कि बेसी फेमस नो लोक माने कंफ्यूज, पिला माने कंफ्यूज हे पारंती. ना बालूखंड एक्चुअली इट इज इन ओडिशा. ओके, सो बालूखंड एक्चुअली ओडिशा रे अछि, जे जो कोणार्क पुरी वाला रूट रे. सो दैट एक्चुअली बालूखंड गोटे जगह अछि जोटी जो कि ब्लैक बक जो अछंती व्हाट हियर जो हरिण सेटा फेमस. सो हेडी कोन कजो. So correct कोड हबो बेसिकली बालूखंड. So भरतपुर कोन फेमस, भरतपुर टाइगर फेमस नो. भरतपुर एक्चुअली it is actually bird sanctuary. Okay, Balukhanda, the Balukhanda Konark Wildlife Sanctuary has an area of 87 kilometers square and is located along the Bay of Bengal coast between the towns of Puri and Konark. Puri and Konark जो marine drive अछि सेथे गोटे बालूखंड जगह अछि जोटा कहै छै बालूखंड कोणार्क वाइल्डलाइफ सेंचुरी. Okay, the sanctuary is home to a herd of black buck and spotted deer. Other animals found in the sanctuary include monkey, squirrel, jungle cat, hyena, jackal, mongoose, predator birds वगैरह. Olive ridley sea turtles nest on the beaches. Okay, but olive ridley को area बेसी famous here Gahirmatha. Sundarbans National Park was established in 1984. बाकी अन्य नेशनल पार्क में हम टिके जान दबा. Sundarbans के बारे में होची. Sundarbans National Park was established in 1984. Constitution core reserve the tiger mandate is a tiger reserve. It was dedicated a UNESCO World Heritage Site in 1987. Basically, before recognized by UNESCO, प्रथमे देश तरफ गोटे ताको दिया जियो प्रपोजल, then only के recognize करबो UNESCO. It was designated as a biosphere reserve.
by UNESCO in 2001. Basically UNESCO रो गोटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनस भी अछि आ गोटे अछि UN man and UN UNESCO MAB basically man and biosphere reserve तो ता अंडर भी अछि सुंदरबंस UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर भी अछि एंड UNESCO रो man and biosphere MAB जो प्रोग्राम ता अंडर भी अछि MAB. It was recognized as the wetland of international importance under the Ramsar Convention in January 2019. So what is saying? जो UNESCO सुंदरबंस was recognized as the wetland of international. तो रामसर कन्वेंशन अंडर भी आछि कोटा हमर यार सुंदरबंस. रामसर कन्वेंशन केबे हितला कोड हितला ओके एटा कमेंट सेक्शन तुम मते कहइबो. It is known for its wide range of fauna, including 260 birds species is home to बहुत सारा चीजें लिखा है. तो estuarine crocodile basically yes because এটা তোমরা কোন coastal area টা Royal Bengal tiger, water monitor lizard, Gangetic dolphin of course because Ganga ही सेठी पड़ुची जाकी olive breeded turtles. Okay, the Sundarbans Delta is the only mangrove forest in the world inhabited by forest tigers. This is very important point. So Sundarban Delta is the only mangrove forest in the world जोटा कि जोथे कि टाइगर माने भी रहउछन फॉर इट्स प्रिजर्वेशन डिस्कवरी इंडिया एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक्चुअली वर्ल्ड वाइड फंड WWF का फुल फॉर्म कोन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड राइट. इंडिया पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लोकल कम्युनिटी इन द Sundarban 2019. I think it is written wrong, so please check it. WWF का कोन एक्चुअली फुल फॉर्म we'll check it here only. Try to see later. WWF चलते हैं हम सर्च करने WWF. Okay, next काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम राइनोसोरस वन हॉर्न राइनो फेमस वेरी मच. भरतपुर बर्ड सेंचुरी जोड़ा कि तमर कोड अछि बेसिकली केवला देव घाना नेशनल पार्क फॉर्मरली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर राजस्थान. केवला देव तुम जानथियो जोड़ा कि दुईटा ही एमती रामसर साइड अछि इंडिया रे जोड़ा कि तमर कोन बेसिकली मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड जाउची. मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड रे भी क्वेश्चन पचार सची OAS रो OAS Prelims रे इवन UPSC रे बेसिकली एमती रामसर साइड जोड़ा कि बेसिकली डिग्रेड हे जाउची सेडा को मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड ताको रखा जाय जेंती आगुर तमर चिलिका भी रखा हितला बट परे रिमूव कर दिया हिची. ओनली दुईटा ही रामसर साइड अछि एमती इंडिया रे जोड़ा कि मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड अछि करंटली वन इज केवला देव जोड़ा कि तमरो राजस्थान रे अछि आ गोटे होछि तमरो कोडा योर लोकताक लेक मणिपुर वाला जोड़ा कि फुमड़ी थाय dancing deers all these things right sangai deer dancing deer. So that is Bharatpur bird sanctuary. So Bharatpur is not famous for tiger, it is famous for bird. जोड़ा कि कोडे अछि राजस्थान रे अछि तो सेडा को एबे कहौ छै केवला तो घाना नेशनल पार्क आगुर कहौला भरतपुर बर्ड सेंचुरी is a famous avi use what is used for basically avians your aves for birds. Avi fauna sanctuary that hosts thousands of birds especially in the winter season. Kaziranga तमे जानछो rhinoceros by famous. Now हमें कोन गोटे चेक करथले हां WWF रो फुल फॉर्म कोन बेसिकली वी हैव टू चेक हां कोन ठीक है तो मैं चेक कर दूंगा हां सुनला इतना स्लो WWF full form in environment not wrestling रे कोन wrestling रे भी गोटे WWF अछि ना. ओके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सेठी हम कोन लिख दिथिलो वर्ल्ड वाइड फंड ओके होइता मुआ कोथि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऐसा कुछ बोल रहा था मैं ना. ओके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज द एक्चुअली करेक्ट थिंग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ओके तो हेडक्वार्टर टा कोड अछि WWF हेडक्वार्टर देखिबा quarters Gland Switzerland. Okay Gland Switzerland अछि ता हेडक्वार्टर. WWF concept on 29th April 1996 under the name of World Wildlife. हाँ पहले था ना World Wildlife Fund. See, I am not telling incorrect. So प्रथमे ना थिला World Wildlife Fund परे चेंज हैछि. So World Wide Fund for Nature is an international non-governmental organization. It's an NGO founded in 1961 that works in the field of wilderness preservation and the reduction of human impact on environment. It was formally named
the World Wildlife Fund, but currently तो official name एबे Canada US रे से अछि. Okay, so it's the world's largest conservation organization वगैरह वगैरह. So it is a foundation with 55% funding from individuals request, 19% from government sources such as World Bank वगैरह. Okay, Living Planet report are both famous. Living Planet report की release करे your WWF, Living Planet Index वगैरह, and ecological footprint calculation. Even they have launched several notable wildlife campaigns like Earth Hour, Death for Nature Swap and all. Okay, Earth Hour पड़ेगा. ठीक है. Basically Earth Hour कौन था कि basically तुमरो basically कौन हुए गोटे दिन जोड़ने की समय कौन कौन थी Wildlife movement organized by Wildlife Fund. The event is held annually, encouraging individuals from business to turn off non-essential electric lights for 1 hour from 8:30 to 9:30 p.m. on a specific date towards the end of March as a symbol of commitment to the planet. Basically गोटे hour को बंद करके समान देखते केबे स्टार्ट होइतले. It was started as a light off event in Sydney, Australia in 2007 में स्टार्ट होइतले. 2007 में स्टार्ट होइतले कोठी सिडनी ऑस्ट्रेलिया रे. Okay, these are the things. Okay, now let's move to our thing. Okay, no number पर्यंत देखलो आउटे गोटे क्वेश्चन आउटे कर दबा for today. Okay, question number 10. Which of the following is expected to be a cause of the rise in sea level? किसे कोची को ए भितरो जो चारटा ऑप्शन अछि कोडा की सी लेवल राइज पई कोटे कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन लगी राइज सी लेवल राइज हो की. ओके, नेक्स्ट मॉनसून रे एते वर्षा जो की सी लेवल राइज हो. नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप. नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. सो ओके, तो मैं एथरो बोल से एनालिसिस करो कोन जानिबो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप. बेसिकली आइस का रे कोन पोलर आइस जो नॉर्थ पोल साउथ पोल रे बहुत जो फ्रेश वाटर कोन स्टोरेज रही बट सडे जब मेल्ट हबो कोन हबो वाटर टा राइज करिवो. राइट, अन्य कोन अछि बेसिकली वर्षा ले कोन सेटा समुद्र अछि पण वापस पळौछि जो ठेला आसी सेटा साइकिल हे चलछि. बट पोलर आइस कैप रे कोन सेटा गोटे स्टोर हे गेथिला जोटा कि साइकिल होने सेटा बेसिकली गोटे हाइट रे थिला सेटा पळि अछि समुद्र को. तो दैट्स व्हाई सी लेवल राइज होछि. सो आंसर इज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप. Now thermal expansion, what is thermal expansion? When water heats up it expands. About half of the sea level rise over the past 25 years is attributable to warmer oceans simply occupying more space. तो जो सी लेवल राइज होची कोन कोन कारण जो कोसे थर्मल एक्सपेंशन बिकॉज़ तोमरा कोन ग्लोबल वार्मिंग होची तो ऑब्वियसली वार्मिंग हेले कोन हीट हुए तले एक्सपांड हुए. सो व्हेन वाटर हीट्स अप इट एक्सपांड्स. अबाउट हाफ ऑफ द सी लेवल राइज ओवर द पास्ट 25 years attributable to warmer. So कोची जो आधा जो कारण होची 50% because of this thing thermal expansion. Okay, so this is also one cause. Second is melting glaciers जोड़ी केटी पचारतला से. Higher temperature caused by global warming have led to greater than average summer melting of larger ice formations like mountain glacier as well as diminished snowfall due to later winters and earlier springs. So high temperature caused by global warming led to greater than average summer melting of large ice formations. जैसे कि हिमालयन माउंट जो थिला तुमरो जोड़ी हिमालय रे भी कोन थर्ड पोल कहा जाय जो तुमरो हिंदू कुश हिमालयन इस ओरिजिन टाकू पामेर नॉट. सो स्नोफॉल भी प्रॉपर होने. स्नोफॉल हेले कोन हो बेसिकली सेटा भी किछि तमरो स्टोरेज रह जाउची. So loss of, then third is saying loss of Greenland and Antarctic ice sheets. As with mountain glaciers, increased heat is causing the massive ice sheets that cover Greenland and Antarctica. So this is one very peculiar thing. There is two countries, one is Greenland, one is Iceland. So ना होची Greenland किंतु सेठी हला बेसी मैक्सिमम हला आइस रे कवर्ड. बट जो Iceland लिखा है सेटा ता ना Iceland बट सेटा हला मतलब relatively more greenery. So this is one thing. Okay, so these are the three things we have seen. 50% karan hoy thermal expansion. Then the second most reason is melting of glaciers. Third is loss of Greenland Antarctic. This is also the same thing only, glacier melt वगैरह. Okay, so we'll stop here for today. So तुम please मते like करिवो वीडियो को and share करिवो तुमरो friends मान को सहित and जहाँ भी question मु जदि वीडियो रे पचारछि ताको आंसर देबो. Okay, so we'll stop here. And comment section में भी तुम्हारा किसी feedback, positive, negative, whatever is there, please tell that thing. And yes, one more thing I forgot to mention. Yeah, yes, Telegram channel was there. You can join Telegram channel. Okay, can I show here? I can show it here. Okay, and the show.
Yes, the Telegram channel. Yeah, we have a Telegram channel here. So you can see here, this is the group, OPS exam revise with me. So you can join this channel and they can also get the files, whatever I shared previously. Okay, OPS exam revise with me. And you will get the link also in the comment section. Okay, so we'll stop here. Hare Krishna.